परमात्मा की याद में बताया हुआ हर पल हर सेकंड लेके है एक उन्होंने दी लियाई है जेड़े आप दिन रात उस प्रभु परमात्मा गा रहे हैं। Celebrations unto the feet of Supreme Gracious Lord Almighty Saman and Kripa. It is all due to their grace that day and night we are singing their glory. Thanks to them for giving us this opportunity of singing their glory. Every moment, every second spent in the remembrance, in the devotion of God Almighty is counted in our devotion. सारी आत्मा उस परमात्मा में सत नाम मन माया के देश से चाबी है अपने कर्मों को भी अपने असली को भी। Our soul is of the same essence as that of Satguru. She is the drop of the ocean of Satnam, and forgetting her reality, her real home, she has come into this world of the material, and she is stuck in this plane of the material of Maya and Maya. संत महात्मा ना तो कोई समाज बनाने वास्ते होता है, ना कोई पढ़े के बदलने वास्ते होता है, ना वो सारे बोले ही बदलता है। कंफ्यूज करते हैं आपको अपने समाज में रहो, आपको अपना रहो, रीति जो खुशी है उसी उसमें करो। जो जिम्मेवारियां साढ़े कर्मां मुताबिक सानू मिलियां हैं उन्होंने भी पूरा करो। लेकिन ये रहते होना जो परमात्मा ने सानू इंसान का जाना एक तोहफा दिता है, ਇਹਦਾ भी फायदा उठाओ। ये तोहफे का किवें फायदा उठा सकते हैं कि जे असी परमात्मा की भक्ति करी, परमात्मा का मिलाप कर लिया तो फायदा उठा लिया। अगर असी परमात्मा की भक्ति का ये अवसर खो दिता, पता नहीं कितने जाके जन्म हो रहना है 84 के फिर सानू मौका मिले ना मिले ना मिले। Saints and Mahatmas neither come in this world to form any new religion, nor do they come in this world to break the earlier formed religions and the communities. They come in this world, they tell us that God Almighty has given you this precious opportunity of this human birth, and while attending to the worldly responsibilities which you have been given, you should make the best use of this opportunity of this human body. How can we make the best use of this opportunity of the human body? We can make the best use of this human body's opportunity only by doing the devotion of God Almighty. Because who knows that after this human birth whether we will get another birth or not. So if we do the devotion of God Almighty in this human birth, only then we are making the best use of it. क्योंकि सारी आत्मा आप एक अपना नहीं है। इस वास्ते संत महात्मा सारी बुद्धि आत्मा उस कर वापस मुड़न का साधन और तरीका दसते हैं। सिर्फ उस साधन तरीका ही दस देंगे, बल्कि साफ होकर उत्थे इस पहुँचाएंगे भी है। Our soul has forgotten her real home, her origin, Satnam, Sachkhand, and that is why saints and Mahatmas lovingly teach us. They tell us about the means and about the practice doing which we can return to our home. They not only teach us, but they accompany us. They make our soul return to her origin. परमात्मा निर्मल है, प्योर है, पवित्र है। सारी आत्मा भी प्योर और पवित्र से, लेकिन मन का साथ लेके मन के खुद इंद्रियों का साथ ले बैठा है। इंद्रियां भोगा फसाई बैठियां हैं। इस वास्ते एक गंदी होगी, मैली होगी। Lord Almighty is stainless, He is pure and holy. Our soul also was stainless, pure and holy. But because she took the company of the mind and the matter, that is why. And furthermore, the mind is in the company of the organs of senses. And because the organs of senses are involved in the dirty things, in the dirt, that is why the mind has become dirty, and our soul has also become dirty because of the company of the mind. इस तरह है कि जिन्हें हिंदुस्तान में कोई अमेरिका का आदमी किसी बच्चे उठा के ले जाए, उत्थे उसकी परवरिश करे, उसकी पढ़ाई लिखाई करावे और उत्थे उसकी शादी वगैरह हो जाए, बाल बच्चे हो जाए, तो उससे मुल्क में अपना मुल्क समझेगा। उन्हें बच्चों
वो बच्चे समझेगा, जिन्ना माता पिता ने उन्होंने पाया है उन्होंने अपने समझेगा। अगर कोई हिंदुस्तान चो जानकार उधर जाता है, देखता है कि भाई ये साਡਾ हिंदुस्तान भरा है और ये फलाने पिंड का है और आ ये माता पिता है, पहला तो बच्चा जोड़ा है कोई बात सुनने वास्ते तैयार नहीं। सानू पता है कि संगत का असर साढ़े उत्ते बड़ी जल्दी होता है। जब असी रोज रोज वो संगत करते हैं, सोहबत करते हैं, वो सानू प्यार ना दसदा है कि तेरे माता पिता तो हिंदुस्तान बैठे है, वो तेरे भैन भरा तेरे विछोड़े च रो रहे हैं और तू इत्थे उन्होंने भुलिया बैठा है। आखिर जो उसके दिल अंदर भी सुरद करके होर अपनी याद पैंदी है, वो भी उत्थे सारिਆਂ छड्ड छड़ा के अपने भैन भरावां नूं आके वो लत मार के मिलण लग जाता है। फिर पता लगता है कि मैनू तो उठा के ही लै गए सीगे, मैं तो उत्थे परदेसी सीगा, असली घर तो असली माता पिता तो मेरे हिंदुस्तान में है। इस तरह साडी जिहड़ी आत्मा है ये परमात्मा तो विछड़ के इत्थे काल के जाल में फसी हुई है। काल ना तो आत्मा पैदा ही कर सकता है, ना इसमें पनाह ही कर सकता है। काल का मतलब इतना ही है कि रचना जिहड़ी है ये कायम रहे। It is like suppose someone comes from America to India and takes away or kidnaps an infant. That boy or that infant is taken to America and he grows up over there. He understands that the parents who are taking care of him are his real parents. He understands that America is his country, and wherever he grows up, the place he understands that is his origin, that is his own home, that own place. And later on when he grows up, he gets married and settles down in that country and he thinks that this is home, this is his home and these are his parents. He doesn't have any awareness that he does not belong to that place. And if suppose someone from India who knows about that infant, that boy, goes to USA and talks to him and tells him that you have another parents and they are waiting for you, they are yearning for you in your home back in India. In the beginning, he is not ready to listen to that person because he doesn't know the reality. But if the person from India is patient and if he goes on spending time in his company, from day to day, because of the day-to-day company, somehow later on he gets convinced that whatever this person from India is saying, that is true, because the soul always wants to return, a person always wants to return to his origin. So when he comes to know about his country through that person, then the desire to return to his homeland is created within him. And then when he finally realizes that the place where he is living is not his home, the parents with whom he was living are not his parents, the brothers and sisters whom he used to think that they are his brothers and sisters, they are not really his brothers and sisters because his brothers and sisters are in India. He gives up everything, whatever he might have over there, and he would return to his homeland, to India. In the same way, our soul, after getting separation, after getting separated from God Almighty, came in this plane of the mind and she was trapped by the negative power and she is living here. She forgot her origin and she understands that this world, this plane where she is living now is her home. But when she comes to realize that this is not her home, this is the negative power's domain. The meaning of negative power or the domain of the negative power is only, because he is also created by God Almighty, is only to maintain this creation which has been created. Otherwise, the negative power, neither he can create any soul, nor he can destroy any soul. He can only look after the creation created. So when the soul realizes that this is not her home, she also returns to her. उस सतपुरुष के बच्चे संसार के परमात्मा भेजता है, वो आके दसते हैं कि भाई काल ने सारी सेवा करी, किसी ਉਹਦੇ सेवा तो प्रभावित होती। एक बार ये मौज वर्ताई, थानू इसमें सौंप दिता है। ਹੁਣ उस परमात्मा ने सानू भेजा है। ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੌਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨਹੀਂ। परमात्मा ने कोई कौम नहीं बनाई, कोई वंश नहीं बनाया। ये ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ बाल बच्चे अपने समझते हो, ਤੁਸੀਂ सोच के देख लो, जब मौत आती है उदों ये साडे इर्द गिर्द बैठे रहते हैं,
ਭੈਣ ਭਰਾ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਜਿਸ ਧਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਧਨ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਰੋਂਦੇ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਕਿਧਰੋਂ, ਕੰਨ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕਿਧਰ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। Saints who are the real children of Satguru are sent in this world by God Almighty Himself, and they tell us that how the negative power did the devotion of God Almighty, the Satguru, and pleased Him, and because of that, we the souls were given in the charge, in the care of the negative power. They lovingly tell us that this is not your home. The children whom you understand your very own are not your children. The things, the wealth which you have in this world is not going to go with you, because it doesn't belong to you, it is not going to go with you. Because you know that whenever end time comes, even though we may have the children, they may be sitting right next to us, but at that time, not even our children are capable of helping us, because when they do not know that from which direction the angel of death came and took us, how can they help us? In the same way, the Masters lovingly tell us that all the wealth and all the things of this world, they all are going to remain here. You understand them as your very own, but they will not go with you and they will not help you when your time to leave this world will come. इस वास्ते संत महात्मा ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੇਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਣੀ ਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫਰਜ਼ੀ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। Saints and Mahatmas lovingly explain to us that just like on the stage, someone plays the role of the king, someone plays the role of the queen, someone plays the role of the daughter, someone plays the role of the servant, and like that. But those relations or those roles are temporary. When the drama is over, when the play is over, and when they all get down from the stage, they all go their own ways, because nobody is anyone's king or the queen or the daughter or son. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਸਾਰੀ ਸਟੇਜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੈਣ ਦਾ ਪਾਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤਨੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਪਤੀ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭਰਾ ਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਾਰਟ ਅਦਾ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਪਾਰਟ ਜਿੰਨੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਕਦੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੈ। In the same way, saints tell us that this world is a very big stage, and we all are playing our own part. We all are performing our own part. Someone is performing the part of the sister, someone is playing the part of the brother, someone is playing the part of the husband, someone is playing the part of the wife. And when our part ends, and when we have performed our part in the playing, then we all take our own way. We don't remember afterwards that who was whose sister and who was whose brother. When we do not remember that who was our sister in our previous life, how can we expect to remember that who is our sister in this present life? जब भी साडी आत्मा उस परमात्मा को विछड़ी है, पता नहीं ने किन्ने पंछियां दे जाने पाए, किन्ने दरख्तां दे पाए, किन्ने सप्पां दे पाए, किन्ने वारी किसी दी पत्नी बनया या पति बनया, किन्ने वारी भैन बनया या भरा बनया। इस वास्ते आप प्यार ना कहते पता नहीं कितनी दफा असी अपने ऐसे अच्छे अच्छे महल बना के छड़ चले हैं, फिर पता नहीं कितने छड़ते हैं। अगर कोई मालिक का प्यारा मिलता, असी ये दुनिया दुखों के जी दुखों की खेती है और दुखों की दुनिया है, वो क्यों आज हाजिर होंगे। Ever since our soul was separated from God Almighty, we do not know that how many times she has got the body of the birds, how many times she has been in the body of the animals, or in the body of the serpents and reptiles and the other creatures. We do not know that how many times we became the husbands, how many times we became the wives and the brothers and sisters. If we had got any beloved of God, if we had come in contact with any perfect master, then we would have not come back into this world of suffering again and again. कई बारी असी राजे बने, कई बारी भिखारी बन चुके हैं।
We do not even know that how many times we made the palaces and the mansions and left them. Many times we have become kings and many times we have become the beggars. कबीर साहब कहते हैं अस्थावर जंगम कीट पतंगा अनक जन कीने बहु रंगा. Kabir Sahib says that we have gone into many different bodies of the reptiles and the animals and the beasts. In many different colors we have assumed the body. ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम गर्भ हो आए. When we got separated from God Almighty, after that we have we had erected many houses like this. जिन्ना संतान को बाबा विश्वनाथ को मैंने दो शब्द का भेज दिया सीगा. जब मैं उन्हें महाराज सावन सिंह के चरणों में लेके गया सीगा, नाल उन्होंने 30 मुसलमान जिन्ना दे कोलो कोली आश्रम सी, उन्हों का बड़ा प्यार होता सी, उन्होंने भी वो साथ लेके गए, वो भी बुजुर्ग सन. महाराज जी बड़िया अच्छियां प्यार भरियां गल्लां बाबा विश्वनाथ के नाल करते सन. और बैठा बैठा वो फकीर जो मुसलमान सीगा वो कहन लगे जी थोड़ा इनू पहला जो जामा सी तो राजे फरीदकोट दे सी. महाराज जी हस के कहन लगे भाई देख हुण मैनूं उन्हां महलां में कोई वड़न दिंदा है. तो फिर वो कहन लगे भी देखो मेरा जन्म फिर उत्थे ही होना सीगा, कई कारणा करके मेरा लुधियाने दे विच जन्म होया. When I took Baba Vishnudas, the master from whom I had got the initiation into the first 2 words, to Baba Savan Singh for his education, he took with him his friend who was a Muslim fakir and his name was Pati. And since Pati had his ashram, his home, very close to where Baba Vishnudas used to live, and since Baba Vishnudas used to love him a lot, so when I took Baba Vishnudas to see Master Savan Singh, he invited him also, so he also came along with us. So Baba Vishnudas and Master Savan Singh were having the meeting, and Master Savan Singh was talking to Baba Vishnudas in a very loving way, and Pati Musulman, the Pati, was also there. So he said that Master, before you came in this body, in your previous birth, you were born as the king of Fordítással. Baba Savan Singh he laughed and he said that you think that if I will go back to those palaces, will they let me in there? He said that I was going to get birth again in the same place, but because of certain reasons, I was born in Ludhiana. इस वास्ते संत महात्मा सानू चेतावनी दिंदे है कि प्यारो इंसान का जामा तुहानू दिता है, जो तुसीं पशु पंछियां के जामिਆਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ नहीं कर सकते वो कर सकते हो. परमात्मा की भक्ति है, परमात्मा नाल मिलाप है. कबीर साहब कहते भजो गोविंद मत जाओ, मानस जन्म का यही ना हो. So this is why things in Mahatma lovingly tell us that dear one, God Almighty has given you this human body, and you can do that work in this human body which you were not able to do when you were given the body of the birds and the animals, and that is the devotion of God Almighty. Kabir Sahib says that meditate on the Govind, the Creator. Do not forget, this is the only advantage you can take from the human body. ਤੁਸੀਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਦਾਤਾ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੌਣ ਮਸਲਾ. Every day you sing this version of Kabir Sahib, which says that there is no donor like the Guru. So the same version, same hymn is presented to you. Listen to it with much attention. गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं खंड पताल दीप सब लोआ काले रस आप प्रभ किया. और जितने भी खंड ब्रह्मांड है, एटली मंडल है, सारे उस प्रभु ने रच के इन्हों का इंतजाम काल के स्पुर्द कर दिता है. Guru Nanak Sahib says that God Almighty, after creating all the khans, all the worlds below, all the islands and all different parts of the creation, He Himself created all this, and He Himself has given charge of all this to the negative power. तेहा गुणा के रहे नरारा सो गुरुमुख शोभा पाएगा. He himself remains different. He is above the 3 gunas, and the Guru who realizes him gets the glory. महात्मा संत गुरु नानक देव जी कहते हैं कि वो परमात्मा का नेचर है, अविनाशी है, वो नाश नहीं होगा, वो फना नहीं होगा. जिहड़ी नीचे दे मंडलों की रचना है, ये एक दिन कोई परलों में रह जाते हैं मंडल, कदे कदे महापरलों में भी रह जाते हैं.
Guru Nanak Sahib says that God Almighty is indestructible, He is immortal. The lower planes which He has created, one day they are going to be finished, one day they are going to be destroyed in the dissolution or the ground level. ਅਸੀਂ ਜੇ ਨਿਚਲੇ ਮੰਡਲਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾਸ ਹੋਣਾ, ਤਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? If we will do the devotion of the lower planes or those who are involved in the lower planes, how can we meet that indestructible one? Because the lower planes and those who are involved in the lower planes are going to be finished one day. Guru Nanak ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਸਦਾ ਸਦਾ ਨਾ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ, ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ੀ ਪੁਰਸ਼ ਹੈ, ਹਰ ਜਾ ਰਹਿ ਸਮਾਏ। Guru Nanak Sahib said that my Sadguru exists all the time. Neither he comes nor he goes. He is the indestructible being and he is all pervading. Maharaj ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਲਬ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰੋੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਥਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਵਰ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Master used to say that one bulb fuses and the other bulb takes its place, but from behind the power is the same, the energy is the same. ਉਹ ਤਾਕਤ ਸਦਾ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। That power always remains in this world. Sometimes it works on one body, in one body, other times it works through other bodies. ਉਹਨਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਹਰ ਜੇਹਾ, ਭੇਦ ਨ ਜਾਣੋ ਮਾਨਸ ਦੇਹਾ। What is the relationship of such beloveds of God with God Almighty? Guru Sahib lovingly tells us that the devotee or the disciple of the Lord is exactly like Lord Himself. Do not understand even a little bit of difference between them. जो जल तरंग उठे को भांति मेरे सलले सलल समाएगा। Just like the wave rises from the water and once again gets absorbed in the water, in the same way the devotee of God is like the God. सारी पता है समुद्र जो और लहर का जो रिश्ता है, वो भी समुद्र का एक हिस्सा ही होती है। ये ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰੀਏ, ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। We know that the relationship of the wave and the ocean is like this. That the wave is a part of the ocean, and if we try to separate the wave from the ocean, it is never possible. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲੋਂ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਮਿਲ ਗਏ ਹੈ, ਮਿਕਸ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਣ ਗਏ ਹੈ। In the same way, if we say that we will separate the beloveds of God from God Almighty, it is not possible because they have mingled in God Almighty, they have absorbed themselves in God Almighty, they have mixed in God Almighty. मीराबाई ने कहा है कि खुद और वासना दोनों अलग नहीं किया जा सकता, इससे तरह परमात्मा और परमात्मा के भक्त अलग नहीं किया जा सकता। And have become the true children of God Almighty. Mirabai had said that just like you cannot separate the fragrance from the flower, in the same way you cannot separate the beloveds of God from God Almighty Himself because they both have become one. ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਆਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਾਸ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਨਾਹ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। But the question arises that what do those masters come in this world and give us? What is the medicine? What is the thing which they give us? Because all the world which we see with our own eyes, one day it is going to perish and destroy. वो परमात्मा ने सदा रहना है। That God Almighty is the only thing which is going to remain always. मैं शुरू जी दसया सी कि साडी आत्मा वो सतनाम की बच्ची है, अपने घर को खुली है, ये आके मन का साथ ले गया है। In the beginning I had said that our soul is the daughter of Sadguru. She has forgotten her home and after coming here she has taken up the company of our mind. इस तरह है कि जब आप कभी करो शाम को अपने घर को सैर करने लगे बाहर निकल जाइए, रात है आप घर का रास्ता भूल जाइए और आप की करते हैं वो जगह चुप करके आप बैठ जाते हैं या चुप करके एकांत होकर सुनना शुरू करते हैं कि किसी पास आवाज़ आती है, वो आवाज़ तो सानू पता लगता है कि इधर ट्रेन आ रही हैं या इधर कोई
उत्ते की आवाज़ आ रही है, जब कोई इंजन चल रहा है, सानू उन आवाज़ों तो पता लगता है कि साडा शहर या साडा घर किस साइड रह गया है, खब्बे या सज्जे। और आवाज़ के नाल असीं आपदे घर का जिहड़ा डायरैक्शन है वो कायम करते हैं। जे उस वेले रस्ते दे विच क्योंकि असीं खुले हुए हैं, उच्चा भी थां है, नीवा भी थां है, झाड़ियाँ भी हैं, खड्डे बड़े हैं, अगर साडे हाथ दे विच टार्च होवे, कोई लंप होवे, असीं वो रस्ते को आसानी दे नाल तय कर लेते हैं। तो पता हुण सवाल पैदा होता है कि असीं तां भुल्ले हुए सी, सानू किस चीज़ ने सहायता कीती घरे उहनूं आवाज़ ने, और सौखा रास्ता किसने बनाया? प्रकाश ने। इसी तरह उस परमात्मा ने साडे अंदर अपनी आवाज़ भी रखी हुई है और अपना प्रकाश भी रखा हुआ है। असीं उस आवाज़ नूं सुन के आपके घर का डायरैक्शन कायम कर लेंदे हैं और प्रकाश के जरिए असीं देखते जाते हैं कि असीं किस मंजिल ते आ गए हैं, साडा कितना सफ़र बाकी रहिंदा है। इस वास्ते वो परमात्मा ने सब कुछ साडे अंदर रखा हुआ है। संत महात्मा जो आउंदे हैं वो सानू उसे प्रकाश नाल जोड़ते हैं, उसे आवाज़ नाल जोड़ते हैं। तो उस आवाज़ में मुसलमान फकीरां ने कलमा कह दिता, गुरु नानक ने रखी बाणी तुरकी बाणी, वेदां दे विच उस नूं तिप धुनी करके बयान किया गया है। सो अलग अलग महात्मा ने आपको अपनी भाषा के लफ्ज़ां दे विच उस दे नाम रखे हुए हैं। स्वाद तो उस शक्ति का है। It is like suppose in the evening we leave our home to go out for taking a walk, and somehow it happens that we lose our way and we land or we end up in a wilderness where we cannot see anything, where we cannot find that from which direction we came and where we have to go. So what we usually do when we are lost like this, when we have lost our way in the wilderness, then we just sit down there quietly and then we try to hear some voice, some sound. So either it is the sound of the barking dog or some machine running or some trains going or something like that. So when we are able to hear one of those sounds, then we can determine the direction, that from where the direction is coming, maybe that is the place from where we came here. Now you know that in the evening, in the night, it is dark, and on the way, since we do not know our way and we have lost our way, so there may be many ditches, many bushes and many obstacles on the way, and we do not know which way to go. Even though with the sound we know that which direction to take, but we do not know exactly that what is the path. So to protect ourselves, if in that case, if we have some source of light like some battery or something like that, then it becomes very easy for us to find our way out of that wilderness. We can determine our direction through the sound which we hear, and using the light of that source of light which we have, which we might have in our hand, we can easily get back to our home. So in the same way, God Almighty has also put His light and sound within us. And saints and Mahatmas, when they come in this world, they connect us with that sound and the light. We hear the sound and we know that which direction to take, and through the light which God Almighty has put within us, we can easily cross the plain after the plain, and through the light we can easily see that how far we have come and how much more we have to travel. So God Almighty has kept both the light and sound within us, and saints and Mahatmas lovingly come in this world and they tell us that you have forgotten your home, and through the light and the sound, and by doing the meditation of the Shabad Naam the Master gives us, we can easily return to our home. Over there, the question is of that power, because all the masters who came in the past, they have described this power of God, this sound of God, in their own language, in their own ways. The Muslim faqirs have called this as the kalma. Guru Nanak Sahib has called it as the voice of God. In the Vedas, it is called as Divyadhuni, or the eternal sound. So all the Mahatmas who came in this world in the past, they have described this sound and the light in their own ways. The question is that we have to catch hold of the sound and we have to catch hold of that light. And by using or by taking the help of the light and sound, we have to return to our home. हम असी की करते हैं, जो महात्मा ने अपने प्यार विचार से उस परमात्मा के नाम रखे हैं, अल्लाह अल्लाह, वाहिगुरु वाहिगुरु,
राम राम, गाड गाड, वो तो असीं दिन रात करते हैं, लेकिन जिस ताकत की नाम है उसनूं मिलण दी आपां कदे कोशिश नहीं करते। Now what do we do? The names which we ourselves have kept of God, like Allah or Ram or God, these are the names which we have given to their power, to their God. We all day long go on repeating these words, but we do not make any effort to go and meet that power which is being described by these words. तो संसार प्यार ना कहते मिश्री मिश्री कहण ना तो मुंह मिठा नहीं हुंदागा, और कौन कौन काम दे नाल आपां शाहूकार नहीं हो सकते जिसनों आपां कदे देखिया ही नहीं, और उहदा आपां किस तरह ध्यान कर सकते हैं। So saints lovingly tell us that just by repeating rock candy or sweet sweet, we cannot feel the sweetness in our mouth. In the same way, just by repeating pound, we cannot become healthy. So in the same way, he whom we have not seen, just by remembering him, just by repeating his name, how can we meet him? ਇਹ ਵੀ ਧਰਮਦਾਸ ਦੇ ਪਰਖਾਏ ਸ਼ਬਦ ਉਚਾਰਿਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ परमात्मा की भक्ति उस आवाज़ ने जोड़िया, आपके चरणों के विच बुलाया, उदों वो की करता सीगा कि वो कर्मकांडी हुंदा सीगा, मूर्तियां बना के पूजिया सीगा। कबीर साहब आए, वो कहने लगे क्यों भाई ये तो तेरे हुए ना 10 सेरे, आ तेरिया छोटिया छोटिया की चटाकियां हैं, और ये कदे बोले है, तेरी भगती का कदे जवाब भी दिता है। ਹੁਣ महात्मा की गल बेशक वो तुरत कौड़ी लगती होंगी है, पर वो गले के थले उतर जाती है। वक्त पा के उसी चीज को धर्मदास ने सोचना शुरू किया कि अगर वो महात्मा मेरे पास खड़ा रहता, तो गुप्त ना होंदा, तो मैं उसको सब कुछ पूछता ये सच है कि मेरे ने कदे बोले नहीं और मैंने कदे जवाब नहीं दिता। This version was said or written for Dharamdas. You know about Dharamdas, that before he came to the feet of Kabir Sahib, he was the one who performs rites and rituals. So one day it so happened that Kabir Sahib came to him. At that time he was worshipping the idols. He had so many different sizes of idols with him and he was worshipping them. So Kabir Sahib asked him that this big idol is maybe of a pound. What are the small ones? Are they of the ounces? So Kabir Sahib lovingly explained to him that you are worshipping those things, those idols who have not spoken even a word. If they are not able to remove the fly from them, if they are not able to protect themselves, how are you expecting any protection from them? Now whatever the masters say, even if it is a bitter word, it goes straight into our heart. So after Kabir Sahib disappeared after saying this, then Dharamdas started thinking that whatever that Mahatma was saying was very true. And then he thought that if I meet that Mahatma again, then I can take advantage of him, I can get the initiation from him. So इसी तरह वो फिर एक दिन लकड़ियाँ जला रहे सन, सोके मियाँ बीबी दोनों, कबीर साहब फिर उठे आए, कहने लगे धर्मदास तू बड़ा पापी है और पाप कर रहे हैं। और आपके पति की नाराजगी बीबी आमना तो ना सहारी गई, वो कहती एक पापी है तू है। तो कबीर साहब इन्नी कहदिया लोग होए, ਉਹਦੇ दिल च फेर होया कि तू ना बोली तो मैं उस महात्मा ना कोई गलबात करता, आपके शख्स को करता। वो कहने लगी कि गोते मक्खियाँ ढेर, तू यद कर, महात्मा आपे ही आ जाएगा। उसने हरद्वार कई यज्ञ किए, क्योंकि धनी धर्मदास का होंदा सीगा। उस वेले हिंदुस्तान के विच 14 करोड़ की ओदी असामी लिखी हुई है। सो इस वास्ते आप प्यार ना कहते हैं कि और होर भी कई जग किए, आखिरी जग ने मथुरा के जाके जमुना के किनारे किया, जो भी रीछ नहीं सी सब ला दी। उधरों व्यापार जिहड़ा सी वो भी चौपट हो गया। आखिर दिल च ख्याल आया कि इधर तो आप डुब के मर जाइए, लोग की कहेंगे कि इसने पागल ने सारा कुछ ही लुटा दिता है। फिर सानू पता है लोक लाज है, लोग की कहेंगे
मैं किते अगे जाके जंगल च रुके मरा गाहां जो जान लगे उसे आकार दा फिर महात्मा उन्होंने मिलिया चरणों ते मत्था टेकिया कहन लग्या महाराज जी मैं तो तुहानू मिलण दी खातिर बड़े यज्ञ कीते बड़ा पैसा खर्च कर दिता है हुण तां मेरे कोल कुछ भी नहीं तुहाडे देण वास्ते। कबीर साहब कहन लगे देख बई जो मालिक नूं समा मंजूर सीगा ਉਹੀ ਉਹ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੁਰਤੇ ਮੱਖੀਆਂ ਢੇਰ तो तू कहना सी महात्मा लालची है क्योंकि मालिक के प्यारे धन दौलत ना खरीदे नहीं जा सकते इस वास्ते वो तो वो शेर होंगे है जिन्हें शेर मुर्दा नहीं खाता गा वो अपना ताज़ा मारिया हुआ खाता है। इसी तरह संत महात्मा किसी की पूजा की पूजा नहीं करते जो मुर्दा नहीं खाते किसी का कमाया हुआ वो शेर होंगे है इस वास्ते अपना कमाया खाते हैं। सो महात्मा सानू प्यार ना दसदे जिवें शेर के कोल दाग लगता है इसी तरह संत शरीफ के सिरताल होंगे है वो किस तरह अगर जो नवी गल आके करते हैं तो उन्होंने जो भी दोष होता है। सो खुद सानू की कमाई करके वो सेवकों को अपने उपदेश का कोई पैसा पाई वसूल देनी वो सेवा करते हैं तो मुफ्त करते हैं। Once again, Kabir Sahib appeared in front of Dharamdas. This time he was washing, he was washing the wood and then burning it for doing his rite and ritual. So Kabir Sahib appeared there and he said that Dharamdas, you are a very big sinner. Now Bibi Amna, who was Dharamdas's wife, could not bear the criticism of her husband, and she said that why do you call my husband a sinner? You may be a sinner. Kabir Sahib told Dharamdas that he was a very big sinner because he was killing many ants alive which were in the wood. But when Bibi Amna said that, at once Kabir Sahib disappeared. Later on, when Dharamdas realized that what that Mahatma had said was very true, because when he broke open the wood, he saw that there were many creatures whom he was going to burn alive. So he said to his wife that if you had kept quiet, I would have talked with that Mahatma and I would have got some answers of my questions. I would have removed some of my doubts. But because you spoke that, because he said, that's why that Mahatma disappeared. So Bibi Amna, who was Dharamdas's wife, said that you don't worry about that. You perform a yajna and you invite all the sadhus and he will come there. And then you can ask him all your questions because where there is a jaggery, many flies come over there. So Dharamdas, who was very wealthy and he was called by the name Dhani Dharamdas, which means wealthy Dharamdas. At that time he had 140 million, he was worth 140 million rupees in India at that time. So that is why he was called wealthy Dharamdas. So he performed many yajnas just in the hope that that Mahatma, who was Kabir Sahib, would return and he would ask him all the questions and he would get benefit from him. But Kabir Sahib never came to any of the yajnas which Dharamdas performed. So in performing the yajnas, he finished all the wealth, all the money he had. In the end, he did the final yajna in the city of Mathura, where he spent every single penny which was left with him. And even in that yajna, when Kabir Sahib did not come, he became very heartbroken and very disappointed. And then he thought that what is the use of living when I did not get that Mahatma back, even after spending all what I had. Now what is the use of my living? Let me go and commit suicide. Then he thought that if I will commit suicide over here everyone knows me. Then they will start talking about me, that look at this guy, he was attached to his money and now he has lost all his money, that is why he is committing suicide. So he thought that let me go to some other place, some faraway place where no one recognizes me, and over there I will commit suicide, and in that way I will be saved from the public shame. So he went a little bit away from Mathura, and when he was about to commit the suicide, the same Mahatma, Kabir Sahib, appeared there, and he said that Mahatma, now I don't have anything left, not even a penny is left with me. If you had come to me earlier, if you had manifested yourself to me earlier, I would have given you all the things which I have. Because Kabir Sahib was not one of those flies which Bibi Amna had said. Because whenever the masters come in this world, they earn their own livelihood. They do not live on the money of their disciples because they are like the tiger. You know that the tiger never eats the dead body.
he himself kills his prey and then he eats. In the same way, when the perfect masters come in this world, they do not live on the other people's money. They make their own living, they earn their own livelihood, and they live their life like that. The tiger knows that if he will eat the dead body, he will bring a bad name, bad reputation to his family. In the same way, the masters also know that if they will live on the other people's money, they will be bringing a bad reputation, bad name to their family of the saints. So that is why they would prefer to die, but they would not take anyone's money, they would not live the life. They would not live the life on other people's money. So that is why, as Bibi Amana, Dharamdas's wife, had said, that you will find many flies affected to the jaggery. Kabir Sahib did not come because he was not one of them. So when Kabir Sahib finally told Dharamdas that this was the right moment, this was the right opportunity of my meeting with you, and now I will give you the initiation. So after that, he got the initiation from Kabir Sahib. So Kabir Sahib Dharamdas ਨੂੰ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਲਹਿਜੇ 'ਚ ਸ਼ਹਿਦ ਵਰਗੇ ਲਹਿਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਵੀ ਧਰਮਦਾਸ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਧੰਦਾ ਸਾਥੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਨਾਸ਼ ਹੋਏ ਨਾ ਫਨਾ ਹੋਏ। ਆਖਰ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਆਖਰ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਧਰਮਦਾਸ ਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ। Kabir Sahib told Dharamdas very sweetly in the words which were as sweet as the honey. He said that Dharamdas, the wealth and the things of this world will not go with you. I will give you that thing which will always be with you. So after that, Kabir Sahib colored both Dharamdas and his wife Bibi Amna in the color of the Naam. And after Kabir Sahib left, he asked Dharamdas to guide the souls after he left. सतगुरु महिमा शब्द पहला कबीर साहब की शब्दावली भाग दूसरा पन्ना 17। जग में गुरु समान नहीं दाता, जग में गुरु समान नहीं दाता, वास्तु सतगुरु ने भली बताई बाटा। जिसने मिश्री खाधी है कोई मिश्री की सिफत कर सकता है। जिन्हें नाम की कमाई की, गुरु मिलिया, नाम मिलिया, ਉਹੀ ਉਹਦੇ ਫਾਇਦੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਨਾਜ਼ ਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਬਾਤ ਉਹ ਦੱਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਆਵੇ। Only he who has tasted the rock candy can describe the sweetness of the rock candy. He who has not ate the rock candy, how can he talk about the sweetness? In the same way, only he who has got the Naam and the meditation of the Naam can sing the glory of the Naam. So here he says that my master has given me that unseen thing, that great thing that I cannot describe it. It is such a great thing, and he has told me a very great talk, great thing. He has told me about my home, and he has given me that secret through which I can go to my home. वास्तु गोचर देई सतगुरु ने भली बताई बाटा, काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीनो नाथा। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਬੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਲੋਭ ਦਾ ਤੁਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਭਗਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਤੀ ਦੱਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਸੁਪਨੇ ਇੱਛਾ ਨਾ ਉੱਠੇ ਗੁਰੂ ਆਣ ਤੁਮਾਰੀ ਹੋ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਨਚਾਰੇ ਉਗਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ। Now he says with the grace of the master
the lust and anger who were making me dance like the monkey, and the dog of the tree who was always barking within me. All these forces have come in my control. Dharamdas has written about his faith and determination in his diary. Up to this extent, he says that, "O Lord, I am so firm in my determination, and I am confident in saying this, that not even in the state of dream do I ever have the desire of these forces or all of these things. I swear by you that I don't have even a trace of these desires." काम क्रोध कैद कर राखे, लोभ को लीनो नाथा, काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले ये साथा। आप कहने लगे कि गुरु ने मैंने दसिया कि उम्र छोटी है, जीवन छोटा है, पता नहीं मौत की घंटी किस वे बज जानी है। जेड़ा काम अज करना कल ते ना शायद कि ऐ ना करके मैं सवेरे भजन करूँगा, परसों करूँगा, चौथे करूँगा, या बाल बच्चों के ब्याह करके करूँगा, या मैं होर खुदा होया करूँगा। कहने लगे कि पता मालूम ने केड़े वेले आवाज मार लेनी है। He says that my master has told me that the life is very short and I have to do the meditation. So that is why I do not postpone the work of today on tomorrow. Do not say that you will meditate tomorrow or day after, or when your kids will get married, or when you will get older, then you will do the meditation. You don't know that when God Almighty is going to call you and when you will have to leave this world. So that is why the work which you are supposed to do today, you must do it today. Do not postpone until tomorrow. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਲਾਨਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲਾਨ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਿੰਦਾ ਮਤਾ ਕਰੇ ਪੂਰਬ ਦੇ ਤਨ ਪਛਮ ਹੀ ਲੈ ਜਾ। We are making our own planning, but we do not have any awareness of the planning of Him who has sent us in this world. Guru Nanak Sahib says that we plan to go in the west, but who knows that in this planning He will take you to the east. काल करे सो हाल ही कर ले, फिर न मिले ये साथा। 84 में जाए पड़ोगे, भुगतो दिन और राता। शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साथा। सब वेद शास्त्र जितने भी है सब पुकार के कह रहे हैं, हरेक महात्मा को करने के लिए चलिया गया है, ਅਸੀਂ चले जाना है। इस वास्ते आप प्यार न कहते हैं कि तुसी बुरी संगत छड़ के अच्छी विच जाओ, किसी मानव के प्यारे की संगत करो, सुख करो, ताकि तुसी भी भुले पड़ के अपने घर जिथों की आत्मा आई है कौन का। All the Vedas and Shastras, all this allowed, and all the masters in this world have said the same thing, that you have come into this world giving up the bad company. You do the devotion of Lord. You do not know that when you have to leave this world, so giving up the bad company, taking advantage of this human body, you do the devotion of Lord. शब्द पुकार पुकार कहत है, कर ले संतन साथा। सुमिर बंदगी कर साहिब की, कालन वावे माथा। ये संसार समुंदर ना दी गहराई का पता है ना चौड़ाई का पता है। इस वास्ते आप कहने लगे बड़े बड़े लिखी कम उठे उस काल के दूतां नूं देख के। सो क्यों उन्होंने जंगलों पहाड़ों के विच जाके तप कीते, सिर्फ मौत के इस जालम पंजे तो डरते हुए। This ocean of world
we do not know its breadth or the length or the depth. That is why the great Rishishal Munis, even they trembled looking at the angels of death. That is why they went in the wilderness, in the forest. They did many austerities. They did a lot of meditation. Why? Only to save themselves from this terrible demonic snatch of the angels of death. ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। Because they did not meet any perfect master, they did not get the simran. That is why they got involved in the cycle of birth and death. तो कबीर साहब कहने लगे है, जो रास्ता जो सिमरन ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਕਾਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। So Kabir Sahib lovingly says that sincerely, wholeheartedly and with firm determination you do the simran which the master has given to you, and then no force of the negative power will bother you. Guru Nanak कहते हैं, जगत पास से लेंदे दान, गोविंद भक्त को सदा सलाम। So Nanak Sahib says that those forces of the negative power, they punish the worldly people, but they bow down to the devotees of God. धर्म राय हर का किया, हर जन सेवक नीड न आवे। Dharam Rai of the Lord of Judgment has been appointed by God Almighty Himself, and He doesn't come near the devotee of God. सुमिर बंदगी कर साहिब की, काल नवावे माथा, कहे कबीर सुनो हो धर्म मानो बचन हमारा, पर्दा खोल मिलो सतगुरु से, आवो लोक दयारा। कबीर दास कहने लगे, देख भाई, पर्दा खोलो। पर्दा किस तरह खोलना है कि सिमरन तीसरे तिल पे ख्याल रख के सिमरन करना है, जो सारी शरीर की सारी चेतन शक्तियां निकल के इस जगह के उत्ते आ जाती है, बिल्कुल एकाग्र हो जाने हैं, फिर प्यार के नाल समझाते हैं। इससे महात्मा कहते पर्दा खुलना। Kabir Das says that look here, open the veil. How do we have to open the veil? We have to do the simran, keeping our attention at the eye center. When we will keep our attention at the eye center and do the simran, all our attention and the consciousness from all over the body will come and concentrate at the eye center, and then the veil will be opened. This is what it means by opening the veil. एक जगह कबीर साहब ने कहा कि संसार अन्ना खूह है, ना इन असलियत का पता है, ना अपने आप का ज्ञान है, पर गुरु तो नाम का दीवा लैके ये असलियत में भी देख लेंदा है, और वो खुद ही गहराई में भी देख लेंदा, उस तो बाहर भी ये आसानी से निकल सकता है। At one place, Kabir Sahib has said that this world is a blind well. We do not know the reality, we cannot see anything, but taking the lamp of the knowledge from the Master, we can see the depth of this well, and we can easily come out of this well if we have the lamp of the knowledge of the Master with us. इस वास्ते सानू भी चाहिए है, जो कुछ कबीर साहब ने सानू प्यार नाल दस्सिया कि सतगुरु सानू वो वस्तु दिंदे है जिहड़ी नाज ना हो, ना होवे, वो केड़ी वस्तु है, वो सार शब्द है, क्योंकि काल त्रिलोकी तक इहदा राज है, लेकिन संत जो वस्तु दिंदे है वो सचखंड दे विचों दिंदे है, इस तो उपरों दिंदे है। So Kabir Sahib told us that the Master has given us that thing which will never destroy, which will never perish, and that is the Sar Shabd. Because all the planes up to the Bhagram fall under the dissolution or the ground dissolution, whereas the seeds come from Sachkhand and they bring that naam, that thing from Sachkhand. Sachkhand doesn't fall in any dissolution or ground dissolution. गुरु सानू वो धन दिंदे है
जिन्हों चोर लुट नहीं सकता, अग्नि साड़ नहीं सकती और ठग ठगी नहीं मार सकता। The Master gives us that wealth which cannot be robbed by any robber, it cannot be burned by any fire. No deceiver or thug can deceive us of that. अगर सेब कोई छड़ना चाहे वो उसको छड़ नहीं सकता, क्योंकि जिन्हें एक बार नाम का रस चख लिया है वो कभी छड़ ही नहीं सकता। Even if the disciple wants to leave it, he cannot leave it because he who has tasted the Naam once, even if he wants, he can never leave it. गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते तोड़ी ना टूटे छोड़ी ना छूटे ऐसी माधो खिंच तनी संत महात्मा साडी आत्मा नूं इस नाल कॉन्टैक्ट कर दिंदे है कि ना साथों तोड़ी टूटदी है ना खिंचदी उन्होंने पासे कर सकती। Guru Arjan Dev Ji Maharaj said that my beloved has connected me so tight that even if I want to break it away, even if I want to leave him, I cannot do that. Saints and Mahatmas connect us with them, connect us with him in such a way that no matter how much effort we make, still we cannot break away from them. तो सानू भी कदर करनी चाहिए जो टाइम सन जिंदगी का मिला है, हमेशा भजन सिमरन करना है। क्यों ना करो कि ये रात कटी है, कल नूं सी वो मन फिर भी तुहाडे कोले है, वो कल नूं भी यही सलाह दे देगा। So we should appreciate the time and we should do the bhajan and simran. Do not say that still there is a long night and we will meditate later on or we will meditate tomorrow, because tomorrow again the same mind is going to be with you and again he will advise you the same. You know, all of you please close your eyes and start meditating. कोई आगे बढ़ने सब लोग कृपा करके यहाँ पे खड़े रहो। बैठे रहो, आगे नहीं बढ़ेगा कोई भी। बैठे रहो।